Hello, let's this question. Benzenamine reacts with benzoyl chloride in presence of aqueous sodium hydroxide to form dash, and the reaction is called dash reaction. So let us see the key concept of this question. The key concept of this question is reaction of amines. Reaction of amines. So let us write the chemical reaction as the question says. Benzenamine, benzene and amine group on this NH2. This is nothing but aniline only. When it is reacted with the benzoyl chloride is this benzene ring and COCl on the benzene ring. When it is reacted in the presence of NaOH, then it leads to the formation of this compound. This is the compound formed NH, C double bond O, and here the ring. Along with this, HCl is released. So this is the basic reaction of this question. In this question, they have asked about the product name and the name of the reaction. So let us see what is the name of this product formed. We can see that the name of this product is N-phenyl benzenamide. Benzenamide. क्या होगा, इसको नेमिंग कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने देख लिया कि एक दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमने अपना वर्ड रूट बेंजीन ले लिया. Then we saw there is a functional group CONH which is a amide, and then we have joined the word root and the functional group benzenamide. After that we will see the substituent. The substituent attached to this is phenyl group, and the substituent is attached with the nitrogen, so it is named as N-phenyl benzenamide. And the name of this reaction is, it is the name reaction Schotten-Baumann reaction. It is Schotten-Baumann reaction. तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया. सेकेंड ब्लैंक में Schotten-Baumann reaction, एंड जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे इट विल बी N-benzamide. जब हम इसका नेमिंग करते हैं तब हम बेंजीन को बेंज यूज करते हैं, while naming it will be benzamide. हमें हमारा आंसर तो मिल गया, बट लेट अस सी कि ये रिएक्शन हुआ कैसे था. हम मैकेनिज्म देख लेते हैं. हमारे पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट था. इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जो सेकेंड रिएक्टेंट है दैट इज बेंजोइल क्लोराइड. ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन lone pair ले लेगा, and the lone pair of the nitrogen will attack on this carbocation formed, and this will make the formation of nitrogen and carbon bond,
as this nitrogen already had 2 hydrogen atoms और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Now this will be negative, O negative, and benzene group is attached, and this carbon has Cl group. Now this negative charge will come back and this Cl will leave, as Cl is the better living group, whereas Cl जब निकलेगा यहाँ से तब ये हाइड्रोजन को भी अपने साथ ले जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो ये हाइड्रोजन अपने इसको इलेक्ट्रॉन देगा और खुद एज ए H पॉजिटिव निकल जाएगा, एंड यहां से HCl का रिमूवल हो गया एंड हमारे पास फॉर्मेशन हो गया हमारे प्रोडक्ट का. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, and the name of the product is N-phenyl benzamide. So हमारा फाइनल आंसर ये है फर्स्ट ब्लैंक का, whereas the second blank is of Schouten-Baumann. Hope you understood it well. Best of luck.